होली है। आप सभी को होली की ढेर सारी बधाइयाँ। होली के रंग आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएं। आई होप आपने आज का दिन बहुत एंजॉय किया होगा। इन सब फेस्टिवल्स का मकसद ही होता है कि हम नेचर के चेंजेस को खुश होकर एक्सेप्ट करें। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है द हाल्सियन शो। हैप्पी होली आप सबको। हर होरी बिरजई में ठानी, कैसी खेलत सबई खिलार, सानी अपनी बानी। हूँ अनार कछु खेल न जानू, पर मिंडत पछतानी। कऊ गावत कऊ नाचत, नारी कऊ ठाय लिपटानी। तरुण बाल लाल संग खेलत, नेह रंगीन में सानी। मोह गुलाल हेत पिचकारी, मोह गुलाल हेत पिचकारी, रस सुकंद जंग जानी। लई छिनाई कामरी कारी, गारी मधुर बखानी। अब तो रचियो खेल, यही ब्रिज में खेलत जैसी अयानी। पेमी फगवा लेहू लाए, सोई छोड़ो लाज बिरानी। बरकतुल्ला प्रेमी ने लिखी एक हुई छोटी सी कहानी है, जिसका एक छोटा सा अनुच्छेद मैंने आपके सामने रखा है। भोजपुरी भाषा में लिखी हुई ये कहानी है और कहानी का छोटा सा अनुच्छेद है, कविता जैसा लिखा हुआ है। तो इसमें प्रेमी जी जो है वो बहुत बड़े सूफी संत रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि किस तरह होली खेली जाती है। होली खेलने का लॉजिकल रीजन तो यही है कि प्रकृति में आने वाले रंग हम अपने जीवन में भी इन्हीं रंगों को शामिल कर लें। इन्हीं रंगों के साथ आज हम बहुत ही दो खास विषयों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शो। किस बात की है देरी। आज के शो का फॉर्मेट मैं बता देती हूँ। सेगमेंट नंबर 1 यानी एक कहानी में सुनेंगे हम होली से जुड़े कुछ मिथ और कुछ विशेष बातें। सेगमेंट नंबर 2 यानी मंडे मोटिवेशन में बात करेंगे हमारी गेस्ट्स के साथ, मिस अलीफिया के साथ, ऑन द टॉपिक करियर कमबैक फॉर वुमेन। उसके बाद सेगमेंट नंबर 3 में बताऊंगी बुक रेकमेंडेशंस और पढ़ेंगे आपके कमेंट्स। सेगमेंट नंबर 4 थॉट ऑफ द वीक में रहेगा एक खास थॉट। उससे पहले मैं बता दूं कि आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कि आपने इस बार की होली कैसी खेली। ईमेल आईडी है radioudan@gmail.com पर, या रेडियो उड़ान इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड सो ऑन। यूट्यूब अगर आप यूट्यूब पर मुझे रिपीट सुन रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का शो कैसा लगा और आपको क्या टॉपिक्स चाहिए, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। खुल के बताइए, लेकिन बताइएगा ज़रूर। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 9463668196 पर। लौटती हूँ एक छोटे से गुजिया वाले ब्रेक के बाद। आप भी थोड़ी ठंडाई के सिप्स ले लीजिए। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर द हाल्सियन शो विथ मी यानी आरजे हर्षदा के साथ। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और मेरी और पूरी रेडियो उड़ान की टीम की तरफ से आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। खुश रहिए, खुशियां मनाइए और होली मनाइए। जर्सी जबरदस्त। IPL इज राउंड द कॉर्नर। सारी टीम्स का जोश जबरदस्त है, साथ ही हम फैंस भी तैयार हैं। स्वागत है आपका #जर्सी जबरदस्त में, जहां हम शेयर करेंगे सारी टीम्स की रिसेंटली लॉन्च्ड जर्सीज का डिस्क्रिप्शन। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। विसल पोडू आर्मी के लिए है नो मेजर चेंज। लॉन्च के दिन धोनी की नंबर 7 जर्सी पेश कर किया फैंस के साथ लव एक्सचेंज। येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन रखा है बेस्ट।
क्या इस साल भी सीएसके को मिलेगा गोल्डन क्रेस्ट? पोलो कॉलर जच रही है बहुत खूब। शोल्डर्स पर है आर्मी स्ट्राइप का पैच जो दे रहा है उन्हें एक सल्यूट। लेगेसी ऑफ द प्राइड का लोगो लग रहा है शानदार। लायन रोल की स्केच ऑन लेफ्ट बॉटम साइड बनाती है उन्हें दमदार। जर्सी का फैब्रिक है सुपर कूल ताकि प्लेयर्स रहे स्वेट फ्री एंड दे रूल। बाकी सारी जर्सी अपडेट्स के साथ मिलते हैं #जर्सी अपडेट्स में ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और मेरी और पूरी रेडियो उड़ान की टीम की तरफ से आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। खुश रहिए, खुशियां मनाइए और होली मनाइए। वाह वाह वाह, ये मम्मी लोग ना बड़ी ही टेस्टी गुजिया बनाती हैं। पूरी जान और प्यार डाल देती है बनाने में। वाह, मजा आ गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके शो में। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हाल्सियन शो। एपिसोड 7 तक हम आ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक 2 हिस्सों में बटा है। एक, होली के मिथ्स एंड करियर कमबैक फॉर वुमेन। सेगमेंट नंबर 1 की तरफ आपको ले चलती हूँ। चलिए आज होली के त्यौहार की सैर करते हैं, जरा घूम के आते हैं कि भाई त्यौहार की शुरुआत कैसे हुई और क्या लॉजिक है होली खेलने का। तो होली सेलिब्रेशंस के बड़े सारे रीजंस होते हैं। माइथोलॉजिकली अगर हम देखें तो it goes around the tales of the story of demon king Hiranyakashipu and his son Prahlad and sister Holika. बट जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा पढ़ा, तो साइंस के मुताबिक होली का सीजन सिग्निफाइज द मौसम चेंज, मतलब मौसम में जो बदलाव है उसका हमारे स्वास्थ्य पर जो असर पड़ता है उससे जुड़ा ये त्यौहार होता है। ठीक है। एंड इन ओल्डर टाइम्स क्या होता था ना, जब ठंडी बहुत होती थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, इतने सारे सीमेंट, मतलब आजकल जैसा पॉल्यूशन नहीं रहता था। सो दैट्स वाई क्या होता था कि देयर वॉज वेरी हार्श विंटर्स एंड इट वॉज नॉट अ रेगुलर हैबिट टू बेथ एवरी डे। ओके, तो इससे क्या होता था कि स्किन पर इन्फेक्शन या इरप्शंस हो जाते थे। तो इन इरप्शंस को ढकने के लिए या फिर उन्हें ठीक करने के लिए हल्दी की पाउडर, मुलेठी की पाउडर, मेहंदी की पाउडर या आम के पत्तों की पाउडर या ब्लू हिबिस्कस जो हमारा फ्लावर होता है उसकी पाउडर या गुलाब के पत्तों की पाउडर, बहुत सारे गुलाब उस वक्त थे, तो उनकी पाउडर बना के दे वुड अप्लाई ऑन देयर हैंड्स, ऑन देयर लेग्स, ऑन देयर फेस। तो इस तरह से इसके लिए एक हीलिंग इफेक्ट भी था एंड इट वाज एक्सचेंज जैसा भी माहौल बन जाता था, एक्सचेंजिंग द व्हाट यू हैव। अगर आपके पास हल्दी पाउडर है, मेरे पास मुलेठी है या मेहंदी है, तो मैं आपसे एक्सचेंज कर लूँ एंड देन वी बोथ कैन पुट इट ऑन ईच अदर। उसी के साथ साथ होली साथ में मिलकर खेलने का रीज़न ये भी था कि बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ सीजन, यानी विंटर, स्प्रिंग और समर्स, ये जो पूरा ट्रांजिशन है, तो ये जब होता था तो लोग बहुत ही आलसी और सुस्त हो जाते थे। देयर वाज बोर्डम, लॉट ऑफ बोर्डम एंड लेजीनेस। तो उस लेजीनेस को कम करने के लिए, हटाने के लिए, तो एक्सेप्ट द समर एज इट इज, लोग मिलते थे, गाने गाते थे और कलर एक्सचेंज होते थे एंड इट इवेंचुअली लेड टू द प्लेइंग ऑफ द फेस्टिवल ऑफ होली। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी यही याद रखना है इससे कि हैप्पीनेस जो है उसके साथ हमें, हैप्पीनेस के साथ हमें कोई भी चेंज एक्सेप्ट करना है, बिकॉज हेल्दी माइंडसेट इज अ ग्रेटर माइंडसेट। इसका और एक जो होलिका दहन का जो एंशियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो देखा गया है, जो डिपिक्ट ये करता है कि किसान जो है वो अपनी पहली फसल अग्नि देवता को समर्पित करते थे। ठीक है, और होता इससे ये था कि जो राख बच जाती थी, जो राख रह जाती थी पीछे में,
उसको एज अ फर्टिलाइजर वो यूज करते थे इन द क्रॉप्स. सो देयर वाज अ डुअल पर्पस इन दैट. तो एंड मैं बहुत सारी स्टोरीज, कल्चर्स और इन सब के बारे में पढ़ रही थी, तो मुझे ये 110% इस चीज़ का ये लगा है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इंडियन कल्चर में एवरीथिंग इज डिफाइंड विद इन लॉजिक एंड इंटेलिजेंस. यस, सब चीज़ बहुत ही लॉजिक के साथ और इंटेलिजेंस के साथ बनाई गई है. ये जितने भी फेस्टिवल्स आप देखते हो, दिस इज ऑल रिलेटेड टू द वेदर changing condition, the nature which is changing and the adaptability of us. हमारे पूर्वज हमारी आज की मानसिकता जानते थे कि हम उसको किस तरीके से लेंगे, और इसीलिए उन्होंने हमको स्टोरीज के साथ ये सिखाने के लिए हमें ये ट्रेडिशन फॉलो करने का एनकरेजमेंट दिया विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज. दैट इज वाई वी हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज. फॉर एग्जाम्पल राधा कृष्ण की भी एक स्टोरी है जहाँ पे राधा कहता है कि मैं काला हूँ, तो जो राधा है उसको भी आप कैसे ये करेंगे, तो राधा उसको भी काला बनाइए या उसको भी मुझ जैसा बनाइए, इस तरह की कुछ स्टोरी है. तो राधा's फेस गेट्स पेंटेड एंड दे प्ले वेल. तो इस तरह से स्टोरीज हैं जिससे कि आप फ्रेश हो जाइए, शुरुआत करिए नए सीजन की एक नए जोश के साथ. अगर आपके पास भी है ऐसी कोई कहानी जो आप शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ ऑन रेडियो उड़ान, तो मुझे ईमेल करके बता सकते हैं या आप आपका फीडबैक भी दे सकते हैं ऑन radioudan@gmail.com पर. रेडियो उड़ान इज अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. इसी के साथ चलते हैं आगे हमारे सेगमेंट नंबर 2 पर, यानी कि मंडे मोटिवेशन. हो क्या रहा है ना कि इन दिनों मुझे बहुत सारी मॉम्स या फिर स्टे एट होम लेडीज जो हैं या स्टे एट होम जो वुमेन हैं जो है वो मिल रही हैं बहुत ज़्यादा. आजकल वो बहुत मेरे साथ शेयर कर रही हैं अपनी सारी चीज़ें, अपने करियर को लेके. कुछ को करियर कम बैक करना है, कुछ ने ब्रेक लिया था बच्चों के लिए एंड दे वांट टू कम बैक. तो उनसे मेरी बहुत ज़्यादा आजकल बात हो रही है. एंड आप सोचेंगे कि आज होली के दिन पे मैं ये क्यों टॉपिक ले रही हूँ, तो आई टेल यू कि ये टॉपिक बहुत ही मस्ट है. बिकॉज यही तो होता है कि ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने को मिलता ही नहीं है. एक तो हम सोचते हैं कि जब टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा तो हम बात करेंगे, तब उस टॉपिक को लेंगे. लेकिन इस सही टाइम के इंतज़ार में वो टॉपिक की जो इम्पॉर्टेंट वैल्यू है वो हम भूल जाते हैं. जो नेसेसिटी है बेसिक, वो चीज़ छूट जाती है और इसी तरह के टॉपिक्स शेयर और डिस्कस नहीं हो पाते हैं. मार्च का महीना ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है और सारी मदर्स जो है वो अभी बच्चों के एडमिशन के साथ साथ नए सिरे से खुद भी अपने एम्बिशंस को पूरा करने का सोच रही हैं. तो आज के लिए आज का शो आपको सुनना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरी सारी प्यारी मॉम्स सुष्मिता, सेजल, कीर्ति, रश्मि, दीप्ति, आयशा, आज का मंडे मोटिवेशन है आपके लिए. करियर कमबैक फॉर वुमेन पर बात करने के लिए मैं लाई हूँ एक बहुत ही खास गेस्ट फ्रॉम पुणे, मिस अलिफिया. Miss Alifia is a higher education professional. She is well renowned in the education space as a multifaceted leader. She has been working since a decade in the media and education industry in various capacities and as advocate of gender equality and in the trust sense of the term. Alifia at heart believes that women are integral to their own success as much as to those around them. She is here to talk us today to throw light on the importance of why should there be economical independence for the women, how to go about making a career comeback choice, and most importantly, women really need to break that glass ceiling or it is still a man's world. Let us decide. हमारी गेस्ट हमारे साथ जुड़ गई है
Hi Alifia, welcome to the Halcyon show. Hi Harshada, thank you so much for inviting me on here. All our pleasure. सबसे पहले तो ये बताइए, how are you? I'm very well, thank you. Okay. So Alifia, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे हमारे फर्स्ट सेगमेंट में, that the career comeback is something which is much talked about and hyped about. Okay. So मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये है कि why there is so much hush for career comeback, especially for women. What is your share of talk on this? I think the reason there is so much hype about women coming back into or re-entering the workforce has a lot to do because we are, now breaking from traditional roles. Okay. Like, हमारे history में आप देखोगे, तो women have always, we've always been the more dormant gender. Correct. And we've always been, looking after the house and, even if our ambitions were there, it was always, home and the workplace. So that breaking those traditional roles is still a very big bubble we need to burst. Okay. So I think that's where maximum of the hype comes from. Okay. But moreover, I think that women now are readily more eager to re-enter the workforce for many reasons. The major reason being personal fulfillment. Okay. That they are looking for that personal intrinsic motivation to re-enter the workforce, to pursue a passion that they must have left behind many ages back, to continue a hobby. Correct. Sometimes it's an economic necessity, because there might be some economic downturns, maybe to drive an additional income source for the family. Correct. It could be a significant event also, like increase in dependence. For divorce, it could be for women. It could be children growing up, leaving their house. That emptiness syndrome. So, sometimes there are multiple reasons that, causes this hype that, okay, we need to re-enter the workforce. Correct. And generally it is not seen in the band. These things are not seen in the band because उनका जो schedule है वो चलता ही है. उनकी life change होती है बट ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है इन चीजों से. देयरफॉर देयर हैज टू बी सो मच हाइप अबाउट इट बिकॉज इट ऑल टेक्स अ टोल ऑन द वुमेन व्हेन शी कम्स बैक फॉर वॉट एवर रीजन मे बी. तो वहां से उठ के वापस आना इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर हर. करेक्ट? आई एम गोइंग द राइट. करेक्ट? Absolutely, you're right. Correct. Yeah. So now the comeback has been done. Everything is set. So does change of interest, I mean what change of interest यानी change of, you can say, area also, area of interest अगर change होता है तो does it affects your career comeback? Yes, I think possibly from it's still a man's world. Why it's still very difficult for women to re-enter the workforce. I'm not going to deny that. Okay. So yes, sometimes women are changing their area of specialization. They are with whatever transferable skills they have, they are doing different sets of things. Maybe you started off in your yesteryears with something in marketing, and then in the sabbatical that you take, probably upgrading, upskilling. And then you move to more of another, like an HR role or a more different kind of a role. So yes, there has been evolving and a change of things in that sabbatical that you've taken. Correct. So definitely an area of change does help. Area of change does help, and it's a new world, so the gap also helps you a lot. Like Alifia, I was discussing with you also that this comeback, there's something which has pushed us to this new job taken up or whatever area of interest. Correct? Yeah. So also I would like you, Alifia, to tell us that what are the habits which you suggest during the break which one should which will help the women who have taken break to keep them updated, because a lot of women lose track of their work or what is happening in their industry. So what are the 5 habits which will make them intellectually strong and they would not lose their confidence once they are back?
Absolutely, you're so correct. I think the 5 habits, the first one would be to set a dedicated timeline and a goal. Okay. It's very important, for women to be so absorbed in everything else, take on additional responsibilities, and forget to make time for herself, prioritize herself. Correct. So I think first things first, you need to set a good timeline, set a goal that, in this much time, this is what I want to do. I want to re-enter the workforce. That clarity has to be there. Okay. Second, I think very important is upskilling. There are so many multiple courses available out there. There are so many new age courses, programs, different things, and upskilling is extremely important. Like, with this technological advancement, what worked 5 years ago also may, be a very different and updated version. Correct. At the moment. So that's very important. Third, I think is what adds to this would be networking. You cannot underemphasize, understate the importance of networking. It's very crucial to meet the right people, be constantly in touch with peers. It could be a friend circle, your industry circle. It could be online, offline, but it's very important. Okay. Fourth, I think would be also, I think, to do some personal project on your own. It could be anything. It could be something as small as, a fitness goal. It could be working on your inner self. It could be anything. I think it's very important to make yourself a personal project in that time off that you take. So when you go back, you can actually say, hey, I traveled. I took a gap year for a year. I traveled. I worked on myself. I traveled across. Or, I accomplished this fitness goal. It could be anything. But you have to make a personal project out of it. Okay. Correct. And last but not the least, I think would be to continuously read and research and be updated with your industry. The trends, the emerging trends, constantly read what's happening, what are the new things that are coming in. And so you're always updated with that information. And I also think women especially should read. They lag behind in reading a lot of stuff. Maybe it's newspaper or books. So reading would also help them in this span to keep themselves updated. Correct? Right. Yeah. In very first question, you, I guess in second question, you said about the timeline, that there should be some timeline and it should be adjusted. So how can, how is the check should be kept that whether comeback is ready or whether a woman is comeback for a she's ready for it, or what type of confidence should she build? Is there some timeline or check that, okay, this much, now 3 years is over or 4 years is over? What will you say about this? I think this is very subjective, What might take 1 year for one woman might take 5 for another. And it all depends on their priorities. Okay. So how do you know whether you're ready to, re-enter the workforce, whether it is part-time or full-time? Okay. I think it all boils down to your priorities. Of course, your financial needs, whether, how quickly you want to rejoin some workspace, and do you have the financial means to cover your emergency funds, etc. for another 6 months, then you can still take a 6-month sabbatical. Okay. Then, of course, there is your work-life balance. What do you want out of it? Yes. So these are very important things. Correct. Work-life balance is something which has to get hit every time, and this is where our making it to the equilibrium takes a lot of efforts, and that should be done. A larger part of the comeback women, they belong to the maternity leave, ones who have got on a maternity leave. So they kind of take 2 years, 3 years, I don't know. And in this time span, they lose a lot of confidence. And I mean, confidence in the sense, they're not sure because there is a responsibility. There's mother guilt also there. There must not be support or family support or whatsoever the reason. So, how do you, think that that confidence they can build and they can push themselves up for this?
So I think first and foremost, the reason I said set a timeline is that even if you're going for a maternity leave or taking a sabbatical out of choice, there are women and men who take a sabbatical out of choice. So, that timeline is very important. If you know you have 1 year or 2 years, for example, you have 2 years and you never got a chance to do a master's, while you were young because you joined work very early. Correct. It's the right time to upskill. Okay. So how to not lose that confidence, I think would be keep continuously upskilling so you're not left behind. And Correct. yes, mom guilt, super mom guilt, all of this does exist. Correct. We are all working mothers, so yes, it's both sides. The grass is always greener on the other side. Correct. So I think what would help is upskilling, personal branding, very important. That what you did during that sabbatical should be showcased and should be taken care of very nicely. Level up your skills, networking. Correct. These all listeners, if you are attentive to in today's show, please make out the points which Alifia is telling to us. These are very important points, and this will not only help to boost your confidence, but these small things that keeping update. Upskilling yourself, using the time, using the gap which you have got usefully, you have to look on to this. Okay. Right. One more thing, more important, I think, is to seek support. Whether it's from other mentors, from career coaches. Correct. Focus on our well-being because mental health is very important. Postpartum. Yes. So, and even celebrating and acknowledging your small wins. So it could be a very small thing that you've accomplished, but still celebrating will never ever let that confidence go. Correct. Celebrate yourself. We often women, हम अपने आप को पीछे खींच लेते हैं इन्हीं चीजों में. We don't celebrate ourselves. So वहीं से आपका confidence आएगा if you celebrate your small win. I'll be noting this today. Okay. Now, there's also a trend which is influencing women to do there's a lot of pressure of being, professional. Do you think that this influence is from the Western habits in working, or like it's the professional way of working? What do you think? I think it's both. I mean, there is no Western or Indian in this. And if it is also a Western habit that we've picked up, it's a very good one. Okay. Because what they have actually brought to our culture and to our organizations here is what they call the coffee culture. But they've increased the productivity. They have taken, made our organizations completely digital. There is a very new hype that's come up in organizations where they are actually including women. Like now it's compulsory for at least one woman to be on the board, right? Yes, correct. It's very important, this diversity, inclusion. I think the Western habits have actually influenced our organizations in a good way. If we incorporate these things, it will give us, boost our productivity and give us work-life balance. Correct. Yeah. While keeping women at the forefront. Okay. Yeah. We were also discussing about this, and you shared your small experience also. So, how hard was it for you to take this career gap or this comeback? How did it serve you? What was your experience? To be honest, I was very lucky. Okay. I had a very good organization when I was pregnant. Okay. They gave me a lot of flexibility when I was pregnant. I had a good 6-month maternity leave. But having said that, I also took a lot of ownership of my work. I remember I was one of the people who actually called my boss back then and told her that 1 month prior to me joining, that hey, I'll be joining back in a month. So I need to get my groundwork done. So when I come back after a month, I have the ball rolling. Okay, correct. So that's the kind of ownership of work also you need to have, because I know mothers who take a maternity leave and then don't show up, to work. And that's also, I think, not right. Okay. It has to be an equal, give and take between women and organizations.
So I remember telling my boss that, hey, 1 month down the line, I'm going to join back and, we need to get the ball rolling. So this is the groundwork I'm doing. So I was very lucky to have the organization support me. Okay. Family support me to get back to work. Okay. I think what most women face, and I've seen it personally with friends, with family, that, and it's a very brown Indian thing, that, after keeping the kid and going to work is very frowned upon, looked down. Yes, absolutely. The guilt, seriously, it kills us inside. We are 110% performing in our professional work. But this mom guilt, kills ourselves inside. It's really hard. I can relate to that. Yes. So I think it's very important to prioritize your professional life and yourself. That guilt is there, but you have to keep that away. You have to figure a way out, whether it is delegating your responsibilities, whether it is a daycare, whether it is, if you have dependents with you, whether it's nursing, whether it's, whatever responsibilities other that you have, that your professional life is a small part of your life, but it's still very integral. So you have to be very strong-headed that, yes, your, that guilt has to be kept aside for some time and you have to work on it. Correct. That's really nice of your experience, and we'll be learning from it a lot. So it wasn't easy. It wasn't easy. There have been days I have been, hunting nannies. We've been a lot of things, but I think when you have a very supportive environment, a good support from your organization, and you have that intrinsic, if you're strong-headed enough to be like, okay, no, this is what I really want to do. I think it all works out. And that will all come once you're confident about it. And delegating work is, it's not something that you're pushing yourself out from your responsibility. It's just the delegance. It's just the giving out the work, right? Absolutely. Yeah. Absolutely. Yeah. And also, it takes a lot of emotional toil. You're replaceable at work. You're not replaceable at home. Yeah, that's the thing. And you're not replaceable also for a mother. You are just delegating the work. You will be the mother till your last breath for your child. So there's nothing harming. A child will always come back to his mother by any means. So we should, cut off that from the mind. Also, it takes a lot of, emotional toil on one goes. It's like just a boom for all emotions run down. So what are your thoughts of, how did you come out from the emotional thoughts of guilt of, supermom, or guilt of, going out for professional work and all? Oh, it's very, it exists a lot. And no, it's not easy. Supermom guilt, additional responsibilities, thinking, hey, I can do it all, I'm a supermom. सुबह उठ के ये हो जाएगा, ये भी कर लो. स्कूल भी भेज दो, काम पे भी चले जाओ, come back after work. There is some other additional responsibilities. There are multiple things, and yes, you think you can do it all. But the truth of the matter is that there will always be a burnout at the end of the day. Correct. So your mental health, your physical health are very important. So when I started off, it was like, okay, I'll do it. But it soon stemmed into me when, my health started deteriorating that no, you can't do it all. So we discussed about all the aspects which we could. The very last one would be, what is your advice to the professionals, how they can make space for their comeback colleagues, and how they can, make the environment, like you talked about that you got a very great boss and a very great environment. So how can they make this free and, comfortable environment for anyone who's having a comeback career? First things first, I would always say prioritize your self-care. It's very important to realize that self-care is a necessity and not a luxury. Okay. So to take care of yourself is far more essential to be able to take care of others. Okay. So I think firstly we should prioritize ourselves. Okay. Next, I would always advise that please seek support.
Please lean on your network of family, friends, your community resources. There are multiple online groups. Meet like-minded women. Okay. Find a mentor. Sometimes when you meet other women who have re-entered the workforce and they share their experiences, it helps to elevate your self-confidence. Okay. So, always find a mentor. Okay. Embrace flexibility when you are re-entering the workforce. Okay. Accept that priorities may shift over time and what, might work today might not work tomorrow. Exactly. So flexibility does help, if you're looking at re-entering the workforce, looking at different roles, you have to be very open-minded, you have to be flexible. Okay. I cannot stress this enough, but very important to reflect on personal values. So make decisions based on what's truly important to you, your family, and not what is expected out of society. Okay. And others. Okay. So I think the decision makers here should just be, for women especially, themselves and their family on how to move forward. Okay. So that focusing on quality time, setting realistic expectations is very important. Okay. That would be. And what about for the professionals who are receiving these comeback moms? I mean, if I am a comeback mom, so what would my colleagues should know? Or what advice do you want to give them that how to accommodate me or how to make a comfortable environment around me? So what, advice for them you want to give? I think these colleagues should know that, you never know what the other person is going through. So you have to make everyone comfortable. Sometimes when women are entering after a very long age gap, they are older. Their younger colleagues at work. I think that age difference, barring any kind of other, barriers, is very important to make an inclusive environment. So to be, to include them, to actually get to know them, keeping personal interactions real. So all this is very important to make them comfortable, offer support when needed. So I know there are people, there are women who take their kids to work on some days, or they invite colleagues over for a birthday or anything. Correct. So that kind of bonding, that kind of comfort is extremely important. Correct. So these are the points which we could enhance. बहुत सारी चीज़ें हैं जो रहती है but they are not addressed in the correct way. So thank you so much, Alifia, for taking out time, and since you're not well also, but that आपने आपका समय दिया and you have shared so many good things, and I'm sure all of the women listeners who are listening to us today, they would know that it's not hard, but it's that much easy. So thank you so much, Alifia, to coming on the show and sharing your valuable thoughts and giving us the time. Thank you so much, Harshada, for inviting me over, and I would still always urge women, please keep working, do not give up on work. It's very important to always be financially independent, and not just for the money, but to, our purpose in life is to always be active, to do something, follow the passion. Correct. So it's very important. Correct. Yes. And this is the advice directly coming to you from a comeback career mom. Am I correct? So if you want to reach Alifia, do let me know. We'll take up all your questions and I'll send it to you, and let's see what all we can make out. Thank you so much for joining us today. Thank you. बात छोटी सी है बट बहुत इम्पैक्ट करती हैं. ब्रेक के बाद मिलती हूँ आपसे और आके डिस्कस करेंगे अबाउट स्पेशल बुक्स और क्या क्या हमें करना चाहिए. सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर द हाल्सियन शो विथ मी आरजे हर्षदा. स्टे ट्यून्ड. हाय एवरीवन, मेरे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा और पूरे रेडियो उड़ान के परिवार की तरफ से आप सभी को अ वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली. स्टे सेफ एंड प्ले सेफ. मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान. इफ लाइट ऑफ लाइफ. मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान.
If light of life. हाय एवरीवन, मेरे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा और पूरे रेडियो उड़ान के परिवार की तरफ से आप सभी को अ वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली। स्टे सेफ एंड प्ले सेफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हाल्सियन शो, मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ। आज हमने इंटरव्यू में डिस्कस किया अलिफिया के साथ अबाउट द करियर कम बैक ऑफ वुमेन, क्या चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ता है और किस तरह की चीज़ें, टिप्स, ट्रिक्स और किस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और किस तरह से अपडेटेड रहें, ये सारी चीज़ें आज हमने सीखी। शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट नंबर 3, बुक्स एंड कमेंट्स। I came across this book which is I found it very apt for today's interview and today's topic which we discussed. The name of the book is Indomitable. It is book by Arundhati Bhattacharya. Arundhati Bhattacharya is former chairperson of SBI. She tells in that she belongs to Bhilai and her journey towards career, and surely this would be a suggestive point in your life if you are going through career comeback or how you want to go up in your career. A working woman's notes on work, life and leadership, जो बहुत ही 3 important points होते हैं किसी के भी करियर में, that is these notes which will help you up. बुक का कवर पेज ही मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मस्त है। इट शोज़ द एलिगेंट एंड कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी ऑफ अरुंधति भट्टाचार्य. Book is quite pocket friendly and it is easily available on all e-book selling platforms. Do read it and share your feedback. चलिए अभी है कमेंट्स की बारी। 2 कमेंट आज मैं पढ़ने वाली हूँ। एक कमेंट आया है राज श्याम कुमार फ्रॉम जामनगर से। वो लिखते हैं, बहुत खूब इंग्लिश में है, फिर भी आपका शो मुझे बहुत पसंद है। बुक्स जो आप बताते हैं वो ऑनलाइन मिल जाती है बट किंडल वर्जन नहीं मिलता कभी कभी, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। शो इज़ ग्रेट। थैंक यू सो मच राज। और जो आपका टेक्निकल चीज़ है, जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, I'll put to my team कि are these book available on the Kindle version, and in next episode I'll share the link or let's see what we can do. नितुलका from बेंगलुरु हमसे कहती हैं कि the much needed show and talk is here. Thank you so much RJ Harshada to explain us so delicate topics in subtle way, and all the best to Radio Udaan team. Thank you so much नितुलका आपका नाम बहुत ही यूनिक है। आई वुड लाइक टू नो द मीनिंग ऑफ इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर केयर, फीडबैक एंड लव टू रेडियो टीम। वी ऑफन वर्क, हमारी टीम बहुत ही वी आर सो डेडिकेटेड। हम हमेशा इस चीज़ के लिए बात करते रहते हैं कि क्या हम हमारे ऑडियंस के लिए लेके आएँ, क्या आज नया होना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, हाउ कैन वी रीच आवर ऑडियंस, हाउ कैन वी मेक देम हैप्पी टू लर्न, लिसन एंड एन्जॉय। इसीलिए तो मैं आपसे कहती रहती हूँ कि आपके कमेंट्स एंड फीडबैक ही हमारे लिए इंकरेजमेंट है, हैप्पीनेस है टू ब्रिंग सच ग्रेट टॉपिक्स। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है या फीडबैक है, या आप किसी विषय पर चर्चा सुनना चाहते हैं या किसी स्पेशल गेस्ट को बुलवाना चाहते हैं, तो डू टेल मी, डू रेकमेंड मी। अगर आप यूट्यूब पे इसे रिपीट सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर मुझे बताइएगा। रेडियो उड़ान एंड टीम इज़ ऑलवेज इन लव एंड ग्रेटफुल टू द लवली लिसनर्स एंड ऑडियंस। चलिए सेगमेंट नंबर 4 का वक्त आ चुका है और जाते जाते बता देती हूँ ओप्रा विनफ्री का थॉट which says, real integrity is doing the right thing, knowing that nobody is going to know whether you did or not. इस पूरे हफ्ते इसे इम्प्लीमेंट करके देखिए और क्या चेंज आता है आपकी लाइफ में इस हफ्ते, मुझे ज़रूर बताइएगा। लॉन्ग वीकेंड है, फिर भी हम मिलेंगे नेक्स्ट मंडे। और मैं आज बता दूं कि नेक्स्ट मंडे
at 9 p.m. We have very special guest on our show. Do not miss next week episode on Radio Udaan, A Flight of Life. Till then, this is RJ Harshada waving you off with love and warmth from your happy place, The Halcyon Show, only on Radio Udaan, A Flight of Life.